Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for more updates. So today I'll deal with the time, speed and distance part 2. Part 1 we have already discussed. So those students who didn't watch the part 1, I'll recommend you to watch the part 1 before watching part 2. तो फ्रेंड्स पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे. Basically this series consists of 6 to 7 videos. Okay, so we will upload one by one. And friends, जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद में पार्ट 2 देखें तो उनको और अच्छा समझ में आएगा. And friends, this video will in the bilingual in nature. That means I will explain the questions in Hindi as well as in English only. Okay, so friends, the questions level it will be like SSC, SSC CGL as well as railway exam and friends bank PO exams. So we will discuss all the levels of question in this video and other competitive exams also. Okay, so first of all, like this video and subscribe our channel. So about us, basically we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes, and learning is priceless, so please do at least. And friends, if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/current affairs funda caf. This is our Facebook channel. You can watch all the videos from there also, and you will be notified in our Facebook page. Okay, and friends, there are certain quizzes here. वहां पर बहुत सारी क्विज भी आती हैं जिसको आप प्ले कर सकते हैं. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक बटन प्रेस करिए. ओके, सो लेट्स गो फ्रेंड्स. These are the type questions. Basically these are the similar type of questions, that's why I have given in the same page. First question is this, friends. Moving 4/9 of his usual speed, a person reaches his office in 36 minutes. How much time he could save by moving his usual speed? तो क्वेश्चन ये कहता है कि 4/9 अपनी यूजुअल स्पीड का अगर पर्सन इस स्पीड से जाता है तो वो 36 मिनट में पहुंच जाता है, तो वो कितना टाइम सेव कर सकता है अगर वो यूजुअल स्पीड से जाए. ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है. So how to solve such kind of problems? This is also same. Moving 5/8 of his actual speed, a person reaches his office in 20 minutes. How much time he could save by moving his actual speed? So friends, these type of questions you can solve in approx 30 seconds. This is my personal guarantee. First of all, pause the video, solve this question by yourself. If you are unable to solve this question, then I am giving you a best shortcut. See, 4/9, this is the moving speed. Then friends, just write down 4 divided by 9 here. Okay, of his usual speed, a person reaches his office in 36 minutes. So friends, this 36 minutes, this is the value of denominator, that is 9. So this is the value of 36 minutes. So if 9 that is equals to 36, so what will be the unitary method? 1 that is equal to 36 divided by 9, it will be 4 minutes. From here we can calculate the value of 4. If 1 is equal to 4 minutes, then 4 it will be 16 minutes. Okay, so friends, what is the difference between these two entities? 16 and 36, it will be 20 minutes. Difference, that is 20 minutes. That is your answer. This is the saving time for moving his usual speed. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको 4/9 वो अपनी यूजुअल स्पीड से अगर पर्सन 36 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है, तो 4/9 लिखा, और जो ये 36 है ये 9 की वैल्यू दी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है. तो 9 की वैल्यू अगर 36 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, और 4 की वैल्यू निकालनी है तो ये 16 हो गई. तो इस तरीके से आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 36 एंड 16, तो ये कितना आया? 20 मिनट्स. दैट इज द
time saving. Okay, second is very similar to the problem. Pause the video, solve this question by yourself. Right now I'm solving for you. This is the 5 by 8 fraction of his actual speed. A person reaches his office in 20 minutes. That means, friends, this is the denominator and 8 ratio, that is equals to 20. Okay, so the value of 8, that is 20 minutes. So what is the value of will be 1? It will be 20 by 8 minutes. Okay, so what will be the value of 5? If 1 is equal to 20 by 8, then 5, it will be 20 by 8 into 5. Okay, so when you will solve this one, then you will get 12.5. Okay, so this will be, friends, 12.5. Take the difference from these two entities, that is equal to 7.5. so he will say basically the 7.5 टाइम. सबसे बेस्ट शॉर्टकट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही है. और आपको करना भी क्या है, जैसे कि एसएससी का पेपर अगर आपका होता है या रेलवे का पेपर होता है या बैंक का पेपर होता है, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 1 मिनट से कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. सो दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन 1 minutes. Follow the only such method. Okay, then your accuracy and your time management will be done. Now friends, let's see, this is very similar to the third problem, but this is a bit different. Moving 13 by 7th of his usual speed, a person completes his race in 35 minutes. How much time he would waste by moving his actual speed? That means if the person that is moving or growing his speed, then he finishes his race in 35 minutes. जब एक आदमी 13/7 अपनी यूजुअल स्पीड का चल रहा है, तो वो 35 मिनट में रेस को खत्म कर दे रहा है. तो आपको ये बताना है कि अगर वो एक्चुअल स्पीड से जाता तो कितना उसका टाइम वेस्ट होता. ओके, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट द फ्रैक्शन हियर, 13 divided by 7. So the value of 7, that is 35 minutes. 7 is equal to 35. So from unitary method, 1 is equal to 35 by 7. It will be 5 minutes. So 13, it will be 13 into 5, that it will be 65 minutes. So friends, what will be the difference here? Difference, that is equals to 65 minus 30, that is 30 minutes. So that is your answer. I hope you all are enjoying this session. तो क्वेश्चन ये कहता है कि 13/7 से अगर कोई पर्सन अपनी यूजुअल स्पीड का जाता है तो वो 35 मिनट में खत्म कर देता है. अगर वो बंदा एक्चुअल स्पीड से जाता है तो वो कितना टाइम वेस्ट करेगा? डेफिनेटली वेस्ट होगा, क्योंकि जब वो स्पीड मूव कर रहा है तो 35 मिनट में पहुंच रहा है. जब एक्चुअल स्पीड से आएगा तो आपको टाइम वेस्ट बताना है. डेफिनेटली टाइम सेव करना बताए या वेस्ट करना बताए, दोनों में आपको सेम मेथड फॉलो करना है. तो देखिए, 7 की वैल्यू 35 दी है, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 35 डिवाइडेड बाई 7. तो अगर 13 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 5 है, तो 13 इंटू 5, 13 की वैल्यू हो जाएगी 65 मिनट हुआ. इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये आया 30 मिनट. दैट इज योर आंसर. अब बात करते हैं कुछ और अदर टाइप्स की. देयर आर सिमिलर एंड देयर आर सर्टेन अदर टाइप्स आल्सो. सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज वेरी डिफरेंट टू all the previous ones. A man is walking at a speed of 9 km per hour. After every kilometer, he takes a rest for 9 minutes. Then find the total time taken by him to cover the distance of 27 km. That is your question. That means एक आदमी जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन हर 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो 9 मिनट का रेस्ट लेता है. तो आपको ये बताना है कि वो 27 किलोमीटर की दूरी करने में उसको टोटल कितना टाइम लेगा, कि रेस्ट लेने के बाद में और टोटल, मतलब आपको टोटल टाइम बताना है कितना टाइम उसको लगेगा. ओके, सो फ्रेंड्स, सपोज दिस इज द डिस्टेंस 27 किलोमीटर. I am dividing it in different slots. These are not the exactly 27, but these, suppose these are the slots. Okay, so first of all, he will complete the 1 kilometer
and he will take a rest of 9 minutes. Again he will take 1 kilometer, he will take 9 minutes rest up to the 26, that is the meter of 26, and he will start from 1 kilometer. Okay, so when he will reach to the 27 minutes, then he will not take the rest. Why? Because he will complete his journey. Then that means if a person is traveling 27 minutes, then total rest slot, that is 26 times. He will not take the rest for the proper 27 times, because at the moment of 27th kilometer his journey will finished. So we don't need to calculate the time at the end of 27. 27 minus 1, that is the total 26 times he will take the stop. Okay, I hope you all understand. सपोज करिए फ्रेंड्स, अगर 27 किलोमीटर की दूरी किसी को तय करनी है, हर एक किलोमीटर के बाद में वो बंदा स्टॉप ले रहा है, तो जब वो 27 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचेगा तो वो फाइनल अपनी जर्नी फिनिश कर देगा, तो उसको स्टॉप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो हमें कितने 26, अगर 27 किलोमीटर दिया है तो 26 स्टॉप होंगे, 100 किलोमीटर है तो 99, मतलब एक कम तक कैलकुलेट करना है। ओके, so see right now the formula to find out the time, that is divide d distance divided by speed. That is the very general formula that you will need to use in this. So first of all, the speed 9 kilometer. We will first of all calculate actual time from here. Actual time in every question. So what is actual time? If he is moving at the rate of 9 kilometer per hour and total distance is 27. So 27 divided by 9. So he will take 3 hour. Okay, actual time. And friends, if how much time he would waste, calculate the base time here. He is taking every kilometer a rest of 9 minutes. That means total journey is 27 kilometer. Then he will take 26 times rest for 9 minutes. So he will be equal to 234 minutes total rest time. Okay, convert it into the hour. 234 divided by 60, it will be equal to 3.9 hour. So what is the total time here? Total time, it will be equal to 3 hour plus 3.9 hour. It will be 6.9 hour. That is your answer. So this is the best way to solve such kind of problems. You can solve this question in hardly 30 to 40 seconds if you are too good in taking the calculations. You don't need to follow these simple steps, just thoroughly read out and calculate in your exams, like t is equal to d divided by s is will be 3 hours, total time 26 into 9, 234. 234 divided by 60, it will be 3.9 hour. 3.9 plus 3 equal to 6.9. I take approx 15 to 20 seconds to solving this problem. That is the best way. You need to comprehensive your time. विद इन टाइम यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखिए, आपको क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व करना है। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपको अच्छा होगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बेस्ट होगा। लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और आपकी क्वेश्चन पर कमांड अच्छी होनी चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है और उसको आप जब एग्जाम में करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हमने एक्चुअल टाइम निकाला। एक्चुअल टाइम, टोटल जो डिस्टेंस है उसको आप 9 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड कर दिए, 3 आवर आपका एक्चुअल टाइम आया। अब देखिए उसने कितना टाइम वेस्ट किया। अब 27 किलोमीटर की जर्नी में हर एक किलोमीटर के बाद में अगर बंदा स्टॉप ले रहा है तो 26 बार तो स्टॉप लेगा ही लेगा। 27वें किलोमीटर पर वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो 26 इंटू 9, 234 मिनट हुआ। 234 को 60 से डिवाइड कर दिया और बन गया हमारा 3.9 और 3.9 प्लस 3 ये 6.9, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर 5 हियर, this is very similar to the previous one. First of all, stop the video, solve this question by yourself. I am solving right now for you friends. Question ये कहता है कि a man is walking at a speed of 12 km per hour after every kilometer. First of all, read this line here. He take a rest of 12 minutes, then find the total time taken by him to cover the distance of 36 km. First of all friends, apply the same formula. Time is equals to
distance divided by speed. So from here, what is the actual time here? Actual time. It will be 36 total distance divided by speed 12. He will take 3 hour. Okay. Base time, total journey 36 kilometer, and he will take a rest for every kilometer. That means total 35 times he will take the rest for 12 minutes. That means that is total base time. So it will be 420 and divided by 60 for converting in hour. So it will be 7 hour. So what is the total time here? Total time 7 plus 3 hour, that is 10 hour. This one is will be your answer. Okay, I hope you all are understand this question. तो देखिए फॉर्मूला होता है t इक्वल टू डिवाइड बाई एस. टाइम बराबर क्या होता है? जो टोटल दूरी होती है उसको स्पीड से भाग दीजिए, चाल से. तो देखिए 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 12 किलोमीटर. और डिस्टेंस कितनी है? 36. तो एक्चुअल टाइम निकाला, 36 को 12 से डिवाइड करके 3 और आ गया, 3 घंटे. अब बेस टाइम कितना होता है? हर एक किलोमीटर के बाद बंदा स्टॉप कर रहा है तो 36 किलोमीटर जाने में वो 35 बार रुकेगा. तो 35 और 12 मिनट बर्बाद किया उसने. 35 इंटू 12, टोटल कितना टाइम बेकार किया? 420 मिनट. इसको 60 से डिवाइड करके घंटे में निकाल दीजिएगा. 7 घंटे उसका टाइम बर्बाद हुआ. तो टोटल कितनी जर्नी हुई? 7 प्लस 3 10 और उसको टोटल लगा. अगर क्वेश्चन एक्चुअल टाइम पूछता है तो आपको एक्चुअल टाइम निकालना है. अगर उसका बेस टाइम पूछता है तो आपको बेस टाइम यहां से निकाल देना है. टोटल टाइम पूछता है तो टोटल निकाल देना है. It's only depend on you. If your question is asking what is the value of base time, so this will be base time. What is actual time? That is this one. And what is total time? Add both these two times. Okay. Now friends, problem number 6 here. A man is walking at a speed of 18 km per hour. After every 7th kilometer, he takes a stop for 6 minutes. Then find the total time taken by him to cover the distance of 90 km. This problem is very similar to the previous one. What first of all, you need to read the question very carefully. He is taking right now every 7th kilometer a stop. He is not taking the stop for every kilometer. He is taking the stop for every 7th kilometer. So what will be the actual time here? Actual time, it will be total distance is 90 kilometer divided by the speed 18. So he will take 5 hour. Okay, the formula is time is equals to distance divided by speed. This one will be your formula. I have applied this same formula here. And friends, right now he is moving for 90 kilometer and he is taking the stop for every 7th kilometer. That means divide by 7, it will be 12 times complete plus 6 kilometer extra. That means he will take the complete 12 stop. That means we can say the total waste time, it will be 12 stop, 12 into, for every stop he is taking 6 minutes. That means 72 minutes. And convert these 72 minutes into hour, divide by 60. It will be friends 6 by 5 hour. What will be the total time here? Add both values, 50 plus 6 by 5 or we can say 5 into 5, 25 plus 6, 31 divided by 5, it will be 6.2 और that is your answer. तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 18 किलोमीटर की स्पीड से अगर कोई बंदा जा रहा है, हर एक 7 किलोमीटर के बाद में वो 6 मिनट का रेस्ट लेता है. 90 किलोमीटर जाने के लिए कितना टोटल टाइम लगेगा? तो 90 को पहले तो 18 से डिवाइड कर दो, एक्चुअल टाइम निकाल लो कि इतना टाइम तो उसको लगेगा ही लगेगा. अब देखिए 90 किलोमीटर के बीच में हर 7 किलोमीटर पर, तो मतलब इसको 7 से डिवाइड कर दो, टोटल 12 टाइम्स आएंगे, 84 बार जाएगा प्लस 6 किलोमीटर 90 होगा. तो हर 7 किलोमीटर दैट मीन्स 12 बार वो बंदा स्टॉप लेगा. तो 12 बार स्टॉप लेता है, 6 मिनट वेस्ट करता है, 72 मिनट उसके बर्बाद हुए. तो 72 मिनट को कन्वर्ट करिए घंटों में, 72 डिवाइडेड बाई 60, इट विल बी 6 by 5 और. So friends, what's the total time here? It will be 5 plus 6 by 5 or we can say 6.2 or. Now friends, let's
try to solve this problem, 7th and 8th. These are the similar ones. These are the very similar to the previous ones like 1, 2 and 3 problems. But there is a bit difference. Right now this person not reaches office in actual time, but he is getting late by 20 minutes or by 28 minutes. So how to deal with these kind of problems? See friends, that is question number 6 here. Moving 5 by 6 of his usual speed, a person reaches his office 20 minutes late. Then find the usual time. So what is the total usual time? So for these such type of questions, first of all write the fraction here, that is 5 divided by 6 here, and he is taking basically 20 minutes late. Okay, so what is the difference in between these two fractions 5 and 6? That is 1 minute. Okay, so divide friends 20 minute by 1 and multiply it with the help of numerator, that it will be 5. So he will take finally 100 minutes as a usual time. Okay, तो देखिए अगर कोई इंसान 5/6 की यूजुअल स्पीड से एक पर्सन जो है वो ऑफिस जो है 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो आपको ये बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या है, क्योंकि वो अपनी यूजुअल स्पीड के 5/6 से जा रहा है इसलिए वो लेट हो रहा है। अगर वो यूजुअल स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए अगर आप इसमें पीएचडी करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट शॉर्टकट, दैट इज द बेस्ट शॉर्टकट हियर। राइट डाउन द फ्रैक्शन हियर, 5 divided by 6, टेक द डिफरेंस दैट इट विल बी 1 minute. Okay, he is taking basically 20 minutes or he is getting late by 20 minutes. That means 20 into numerator 5 divided by the difference, that is 1. In every question you need to follow this strategy only. See right now 7 by 11, that is the fraction here, and he is reaching his office 28 minutes late. That means 28 minutes. So what is the difference here? 7 and 11, it will be 4. So friends, 28 into 7 divided by 4. So it will be 7 times 7 into 7, that is 49 minutes. It will be the usual time. And friends, for the purpose of competitive exams, you need to solve the question in very short span of time. But the concept will be clear, because this is not a jugaad we can say, but this could be a best and simplest strategy to solve such kind of problems in within time span. But this will be follow on each and every questions if they will be similar to this kind of problems. Okay, तो देखिए अगर आपके पेपर में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको 10 सेकंड से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको यही मेथड अप्लाई करना है। तो 7/11 की यूजुअल स्पीड है, तो डिफरेंस ले लीजिए दोनों फ्रैक्शंस के बीच में कितना है, 4 का। अब 28 मिनट लेट हो रहा है, मतलब कि 28 इंटू न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए डिफरेंस से 4, ये आपका 49। किसी बुक में ये फॉर्मूले के तौर पर आपको मिलेगा, बट राइट नाउ you should understand this trick only. Now friends, let's see 9th and 10th, they are very similar to the previous one, but he is reaching the office 14 minutes earlier. If we are talking about the earlier or he is getting late, you need to put the same formula in both kind of questions. चाहे बंदा लेट हो चाहे वो जल्दी पहुंचे, लेकिन आपको फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है। राइट नाउ सी फ्रेंड्स, that is 7 by 5th is the fraction here. What is difference here? 2. He is reaching his office 14 minutes earlier. That means 14 minutes is the reaching office time earlier. That means friends, 14 into difference, 14 into numerator, that is 7, divided by difference, so it will be also 49 minutes. That will be your answer. तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया है, 7/5 मूविंग स्पीड है उसकी और वो 14 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब डिफरेंस आया 2, तो 14 को 2 से तो डिवाइड करना है रेफरेंस से, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, न्यूमरेटर पार्ट से। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करिए, 25/13 and what is the difference here, 12 will be the difference, and he is basically reaching his office 36 minutes earlier. That means 36 into this part, numerator part, 25 divided by difference 12, so it will be 75 minutes. That will be your answer. ये आपका
आंसर हो जाएगा. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड these similar type of problems. Friends, do practice as much as you can. And if you like our content, then please like our video, also comment here and share this one for all your friends those don't know our channel. And I'm giving to you a task, friends. For my every follower or for my every subscribe student, please recommend for every 10 students to join this channel. This could be a great tribute for my channel from your side also. That's why I'm giving to you. Share our videos to all of them and tell them there is a free education channel on the YouTube. You will get all the informations from there. Okay. Thanks guys for watching this video. Have a nice day.